Alright, in this video we are going to about the concepts of alpha, that is your base angle, theta and quadrants. So we will start with quadrants. In trigonometry there are four quadrants. There are four quadrants with the numbering of 1, 2, 3, 4. Now these quadrants have a special property. In the first quadrant we say that all trigonometric functions are positive. In the second quadrant we say that sine is positive. In the third quadrant we say that tan is positive. And in the fourth quadrant we say that cos is positive. If I am saying that sine is positive in the second quadrant, that means what I'm saying that cos and tan, they both are negative in the second quadrant. If I'm saying that in the third quadrant tan is positive, that means I'm saying that sine and cos both are negative in the third quadrant. And similarly for fourth quadrant, if cos is positive, that means sine and tan are negative in the fourth quadrant. So whatever the function I am writing in the each of the quadrant, that means that this function specifically in this quadrant is positive and other all the functions are negative. Secondly, if sine is positive, that means its reversal function, that is cosec, is also positive in the second quadrant. If tan is positive means cot is positive, and if cos is positive means sec is positive. So that is the first and the important concept of the quadrants, that you must understand that in which quadrant which function is positive and in which function is negative. After that we are going to start about the base angle, and it is denoted by alpha. Now if I draw the quadrant, so base angle is always starts from horizontal axis, right? Let's suppose in my first quadrant, that is my base angle alpha. In my second quadrant, that is my base angle alpha. Third quadrant alpha, and fourth quadrant alpha. So what is alpha? Alpha always starts from x axis, or you can say that always measures from x axis. After base angle we need to discuss about theta. Now theta is very important, right? Our ultimate goal is to find the values of theta. Now theta, first thing I'm talking about the direction. When we are measuring anti-clockwise, that means the sign is positive, and if we move in a clockwise direction, that means now it's a negative sign. So that is very important. Now how you are going to measure theta, and what is actually the difference between theta and alpha? Let's suppose that I have again made the quadrants, and now in this quadrant I'm going to discuss about theta and alpha both. Firstly, I will plot alpha like the one I've done in the previous diagram. Alpha, alpha and alpha, right? There are four alphas. Now if we talk about theta, first thing, theta always starts from the horizontal x-axis, that means my first quadrant, right? And it measures in anti-clockwise when the sign is positive. So that is the theta for the first quadrant. If you talk about the second quadrant, always starts from the first quadrant x-axis, and that is my theta for the second quadrant. If you talk about third quadrant, starts from positive x-axis, third quadrant, that is my theta. And for the last one it will be starts from the horizontal x-axis and in the fourth quadrant, so that is my theta. All right, so theta is different from each of the quadrants. It starts from the horizontal x-axis. If the direction is positive, that means we need to move in a anti-clockwise direction. If the direction is clockwise, how you are going to define in your diagram? So if the direction is clockwise, again firstly I am plotting alpha in all four quadrants, alpha and alpha. Now if we are going to measure in the clockwise direction, so for the fourth quadrant, that will be my theta, right? And after that,
starts from the same axis from the third quadrant, that is my theta. After that, for the second quadrant, that will be my theta, and for the first quadrant, that is my theta. So first thing is you need to confirm it that whatever your direction is, the number of your quadrants is not changing. First, second, third, and fourth. So the quadrant number is always same, either you are moving in a clockwise direction or you are moving in a anti-clockwise direction. Alright, that is video number 2 of the topic trigonometry. In the previous video, we had talked about what is the concept of alpha, that is your base angle, and theta, and the importance of quadrants in the last video, right? In this video, we are going to discuss how to solve the exam style question or your book question. So I had written a question here that sine x is 2 upon 5, and you need to find out the value of theta in all the quadrants, and the range is defined. Alright, now there are few things that you need to highlight at the beginning of your question. At first point, you need to observe the unit. Right now we are moving in degree, right? So right now we are moving in degree because there is one more unit, that is radian. We are going to discuss further. So first thing, we need to observe the unit, that it is in degree or radian. For the next, you need to highlight this angle here. If it's written sin x, cos x, tan x, there is no number present. That means this won't affect your range. So second thing, you need to identify your range. Either it is changing or not. And how you are going to find out? Simply, if there is any number, with your angle, that means now it will affect your range. If there is one, like in this question, then it won't affect your range. Alright, so these are the two things that you need to observe at the beginning of your question. After that, there are certain steps to complete this question, and I'm going to write down the steps. For the first step, you need to find alpha, and I'm saying that you need to find base angle. Alright, how you find base angle? Simply shift your trigonometric function on the right side, so it will be alpha. When you are finding the base angle, it will be alpha equals to sine inverse of 2 divided by 5. Now sine inverse of 2 upon 5 is 23.57. Alright, so that is your alpha. The second thing, you need to highlight your quadrants. And how you are going to do that? Simply you need to observe the sign present with your function right here. Now here there is no sign, that means that automatically we have a positive sign. So if we have a positive sign, that means either you are dealing in the first quadrant because sign is positive in the first one as discussed in the last video, and sign is positive in the second quadrant, right? So there are two possibilities, that theta may lie in the first quadrant or theta may lie in the second quadrant. And how we defined it? We define it with the help of this sign. Alright, so once you identify your quadrants, after that the third step, and it is for your benefit, you need to highlight base angle or you need to draw roughly axis. What does it mean? If I draw the roughly axis here, so firstly I need to move either in the first or in the second quadrant. So I'm going to highlight alpha here, right? That is my alpha for the first one, and for the second one that is my alpha, and the value of alpha is what? 23.57. That is my third step. And the fourth step, you need to highlight the theta. So for the first quadrant, theta starts from the x-axis. Since the range is positive, that means we are moving in a anti-clockwise direction. So theta for the first quadrant is equals to alpha, and that is 23.57. When we are going to find the theta for the second quadrant, so that is my second quadrant, and the value is what?
180 minus 23.57, right? If we are moving from this point to this point, we had covered the angle 180. We don't need this part because we need to stop right here. So we need to subtract 23.57 from 180. So the final values for theta is, the first one it's 23.57 and the next one is 156.42. These are your final answers. Now there is one more example, 10x is equals to minus 2 upon 7. It will be good if you pause the video at this time and try it by yourself and then see its solution. Alright, so the steps that I mentioned earlier, I'm going to solve with the same step. The first one is your base angle. So base angle is what? Base angle is tan inverse of 2 divided by 7. Keep in mind that we are not going to consider the sign of negative with my base angle, because this negative sign is only for quadrants. Alright, so the first step is you need to find out your alpha inverse of 10, and that is 15.94. That is your alpha base angle. For the next step, I have done the first one, base angle. For the next step, I need to highlight quadrants here. So the quadrants that I need to travel, 10 is negative. Either we are in second quadrant or we are in fourth quadrant. So that is my second step. Third step, I need to draw roughly axis in which quadrant my theta lies, either in the first, second quadrant or in the fourth quadrant. Now I need to highlight alpha for both cases. Alpha is 15.94, 15.94. Alright, that is the completion of step number 3. And lastly, I need to draw the theta. For the second quadrant, we know that that is my theta, right? So for the second quadrant, I'm saying that it's 180 minus 15.94, right? And for the fourth quadrant, that is my theta highlighted in red. So if I cover the whole circumference, whole circle, that means I had traveled 360, and I don't need that part 15.94, so I need to subtract it. All right, so 15.94 subtracted from 180, you will get 164.05. Similarly, 360 minus 15.94, you will get 344.06. That is your theta. Alright, it's trigonometry video number 3. In this video, we are going to discuss same type of questions we had discussed in the last video, but the change is when your range changes. Now what does it mean? It means that when you have a number with your angle, it can be any number. It is not mandatory that it is always multiply. It can be add, it can be 2 plus x, it can be x minus 50, it can be anything with your angle. So there are some certain steps that you need to attempt before you are going to attempt such type of questions. Alright, now the first step is you need to highlight your range, and how you are going to do that is very simple. You need to observe that range given here, right? It says that it's x from 0 till 360. Now when it is x, it is 0 and 360, but our value of angle is 2x. So what if it's 2x? So what you need to do, you need to multiply 2 with the 0 because 0 is the lower value, and you need to multiply 2 with 360 because 360 is your highest value. Now the range that you are going to get is 0, 2x till 720. Now this 720 is very important because it shows that now there is a need of 2 complete revolutions we are going to solve in this question. And how we are going to solve it, you are going to find out in further steps. Now that is your first and the most important step, to highlight your range. Now for the next step, again you need to find out the base angle, that is alpha. Your question is sine 2x is 1 upon 2. So alpha is equals to sine inverse of 1 divided by 2. Alpha equals to sine inverse of 1 divided by 2 is 30 degree. Alright, so that is your second step. After that, third one, you need to highlight
quadrant here. Since the sign is positive, sign positive indicates that either it's in the first quadrant or in the second quadrant. Once you had highlighted the quadrants, fourth step, roughly sketch of x's, right? So if I roughly sketch here in my step number 4, I need to highlight a base angle in the first and in the second quadrant because sign is positive. The value of base angle is 30, so I'm just writing 30 here for both of the quadrants. Now, the fifth step, I need to highlight theta now. Now, that is going to very important part because the range is changed, it's 720. Now, we are going to start from the horizontal x-axis, this one point, right? This point here. For the first quadrant, if I'm going to start first revolution, so I had traveled in the first quadrant, so the values of theta for the first quadrant is 30. When I travel from the first quadrant till this point, so I traveled 180 minus 30, it's 150, right? Now that is not the end of the question because it requires 2 complete revolution, right? What does it mean? It means now I need to travel all along after the fourth quadrant. If I explain here, let's say that starting from this point, if I travel, that is my first complete revolution. All right, now I need to do it one more time. Now when I again turn around this value, now that is not 30 degree. Now the value is 360 plus 30 degree because I had completed one complete revolution, right? And for this part that is not 150 only, that will be 360 plus 150. So the final values are 30, 150, 390, 360 plus 100 is 460, 460 plus 50 it's 510, right? And on your left side you are not getting theta. The value of theta is basically 2x, so here you have 2x. You need to find out the value of x here, so you need to divide 2 with all of these values. So x is equals to 15, 75, it's 195, and lastly it's 255. So these are the final values of x. Alright, in this video we are going to discuss about साइन कर्व और इसको कैसे कैसे करते हैं. तो पहले हम साइन कर्व के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है ना. साइन की कुछ खासियत. फर्स्ट थिंग, साइन की आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज़ +1 और जो साइन की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज़ -1. पहली चीज़. दूसरी, साइन का जो आपके पास पीरियड होता है दैट इज़ ऑलवेज 360. अब ये पीरियड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको. हमारे पास जनरल एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a साइन bx प्लस c. ऑलराइट, इनके नाम होते हैं हमारे पास. a डिफाइंस व्हाट? a डिफाइंस एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, एम्पलीट्यूड को हम कह सकते हैं द हाईएस्ट और द लोवेस्ट पॉइंट ऑन योर ग्राफ. b डायरेक्टली कोई आंसर नहीं देगा लेकिन b हेल्प करेगा टू फाइंड पीरियड. ऑलराइट, कभी भी आपको पीरियड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर बी है आपका, 3 है 4 है, जो भी नंबर होगा आप डिवाइड कर देंगे, आपको पीरियड मिल जाएगा. एंड व्हाट इज सी? सी इज द एक्सिस ऑफ कर्व. आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सी होता है, ठीक है ना. ये आपके पास एक साइन की जनरल चीज़ें होती हैं. साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वन होती है. अच्छा, हमारे पास दो केस होते हैं तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ. दैट इज़ योर केस 1. केस 1 मैं उसको बोलता हूँ जब आपके पास b की वैल्यू 1, मतलब साइन x, 2 साइन x लिखा हुआ है, 5 साइन x लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब b की वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगी, ठीक है ना. इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल. y इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 3. अरे जनरली हमारे पास जो साइन का कर्व होता है वो कैसा बनता है, अभी मैं इसके अलावा बताऊं कि सिंपल अगर लिखा है y इक्वल्स टू साइन x,
ये कर्व कैसे बनेगा, आप एक्स एक्सिस पर अगर आपके पास एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो आपकी वैल्यूज जो एक्स एक्सिस पर होंगी, दैट इज योर एंगल, तो वो वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, इट्स 90, 180, 270 एंड 360। ये वैल्यू डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होती हैं ये एक्स के साथ। अगर एक्स है, खाली एक्स, कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यूज हमेशा आती रहेंगी, ठीक है जी। वाई एक्सिस पर क्या आएगा, मैंने कहा साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास -1, ठीक है। क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है। अब साइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। एक चीज़ याद रखिएगा, उसको मैं लिख रहा हूँ येलो से, 0 मैक्स या 0 के साथ मैं करता हूँ हाईएस्ट, 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट, 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पॉइंट से हमेशा साइन का ऐसी कर्व बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा आप देखें, 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट, 0। बस यही पैटर्न हमने हर ग्राफ में फॉलो करना है, 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट, 0। बस आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है, कोई भी साइन का कर्व होगा आराम से बन जाएगा। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करूँगा। पहली चीज़, ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो मैं 3 पर एक लाइन बना देता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा ये मेरी लाइन 3 है, मैंने 3 पर एक डॉटेड लाइन बना दी, ये मेरा एक्सिस ऑफ कर्व है, मतलब मेरे ग्राफ का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। दूसरी बात कि चूँकि केस 1 है, यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास जो x की वैल्यूज़ होंगी वो सेम रहेंगी जो मैंने ऊपर ली है। इट्स 90, 180, 270 एंड 360। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर। देखिए साइन की अपनी मैक्सिमम होती है मेरे पास 1, तो अगर मुझे निकालना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 3 + 2। दोबारा देखें, 3 + 2 5। इसका मतलब ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। अच्छा मिनिमम क्या होगी, दोबारा देखिएगा 3 - 2, क्योंकि साइन की जगह जब -1 आ जाएगा, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, तो जैसे ही यहाँ पर -1 हम इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, -2 + 3 का आंसर आएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास आई लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कैसे निकाली, साइन की जगह 1 लिख दिया। लोवेस्ट कैसे निकाली, साइन की जगह -1 कर दिया। 2 + 3 5 हाईएस्ट, -2 + 3 1 लोवेस्ट। अब पॉइंट्स का पैटर्न वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्या पैटर्न है भाई, जरा दोबारा देखते हैं। 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट एंड 0 अगेन। कनेक्ट करते हैं, 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट एंड 0। तो ये आपका साइन का कर्व बन गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। मैंने बनाया y = 3 sin x - 2। तो एक दफ़ा आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि आप कैसे ट्राई करते हैं और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहली चीज़, मेरे पास एक्सिस ऑफ कर्व क्या है भाई, -2। तो मैं अपने पास -2 पर एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई साइन कर्व, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी भाई, 3 - 2, सही है ना। 3 - 2 का मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी ये जाएगी 1 पर। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। साइन की जगह आप 1 प्लेस कर दो मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम कैसे निकालोगे कि साइन की जगह आप -1 प्लेस कर दो। तो -3 - 2 लीड्स टू -5। अब -5 कहाँ होगा, 3 4 -5 यहाँ होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा कर्व इन वैल्यूज़ के बीच में होगा। पॉइंट्स आपके सेम है जो यहाँ से स्टार्ट किया है। क्या है भाई, 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट, 0, 0 हाईएस्ट, 0 लोवेस्ट एंड देन 0 अगेन। तो ये आपका साइन का कर्व हो गया। ऑल राइट, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर अबाउट कॉस कर्व, हाउ टू स्केच कॉस कर्व। लाइक साइन कर्व्स, कॉस की इक्वेशन हमारे पास क्या है, a cos bx + c, जैसे साइन में पढ़ा था हमने, ठीक है। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये +1 को और -1 को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक आप डिग्री मोड पे काम कर रहे हो। कॉस का भी पीरियड 360 होता है। अच्छा पीरियड क्या होता है, मतलब 360 डिग्री में कॉस एक दफ़ा खुद को रिपीट करेगा। जनरल इक्वेशन क्या है, y = a cos bx + c, a एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पॉइंट, b हेल्प्स टू फाइंड पीरियड। वर्किंग फॉर्मूला इज 360 डिवाइड बाय जो भी नंबर b होगा डिवाइड कर दोगे आपको पीरियड मिल जाएगा। एंड c इज द एक्सिस ऑफ कर्व, यू कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट। कॉस का जनरली कर्व कैसे बनता है, अगर मैं कहूँ y = cos x, इसका कर्व कैसे बनेगा, x पर वैल्यू, जब भी आपके पास x है, सिंपल x है, कोई नंबर नहीं है, तो आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी बेटा, 90, 180,
270 एंड देन 360, ये आपकी वैल्यूज होंगी हमेशा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास +1, मिनिमम है हमारे पास -1। अब कॉस के बिहेवियर, जैसे हमने साइन के बारे में पढ़ा था, वैसे कॉस के बिहेवियर्स क्या होते हैं? कॉस होता है हमारे पास हाईएस्ट, 0, लोवेस्ट, 0, हाईएस्ट। बस इस पैटर्न को आप याद रखें, कोई भी कॉस ग्राफ आप बना सकते हो। अब इनको अप्लाई करते हैं। हाईएस्ट 0, लोवेस्ट 0 एंड हाईएस्ट अगेन। कनेक्ट करेंगे इन पॉइंट्स को तो कर्व बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी लाइक दिस। ये आपका स्ट्रेट अवे सिंपल सा कॉस का कर्व बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 1। सिंपल एग्जांपल। पहली चीज़, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमारे पास 1 पर होगा, तो मैं 1 पर क्या करता हूँ, एक्सिस ऑफ कर्व के डॉट्स बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि आपके पास सिर्फ cos x लिखा है, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब कि आपका x एक्सिस चेंज नहीं होगा। 90, 180, 270 एंड देन 360 डिग्री। आपके पास cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 + 1 3। तो cos मेरे पास जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 3 तक, और मिनिमम क्या होगी भाई? -2 + 1 इट्स -1। मिनिमम जाएगा -1 तक। मैक्सिमम मिनिमम हाईलाइट हो गई मेरे पास, एक्सिस ऑफ कर्व हो गया। अब सिर्फ मैंने अपने बिहेवियर को फॉलो करना है। क्या बिहेवियर है मेरा? हाईएस्ट 0, लोवेस्ट 0 एंड देन हाईएस्ट अगेन। ऑलराइट, इन पॉइंट्स को हमने अब कनेक्ट करना है। तो ये मेरे पास कॉस का कर्व आ जाएगा। जब आपका पीरियड या जब आपके पास यहाँ कोई नंबर नहीं होगा तो आपके पास हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनता रहेगा। Alright, in this video we are going to discuss how to sketch the graph of tangent. Alright, so that is the general equation of tangent. अब यहाँ पर आपको A क्या डिफाइन कर रहा है? A represents the amplitude, B बेसिकली B कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, B आपको हेल्प करता है, helps to find period, and C is what? C represents the axis of curve, or you can say that the starting point. अच्छा, tan के ग्राफ में एक वाइट चीज़ होती है जो साइन कॉस में नहीं होती, उस चीज़ को हम कहते हैं एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट्स क्या होती हैं? अनडिफाइंड लाइंस। अब एक जनरल सा ग्राफ हम स्टडी करते हैं, y इक्वल्स टू 10x। ऑलराइट, ग्राफ कैसे बनेगा स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास अभी अगर 10x है तो एजिम्पटोट्स कहाँ बनेगा? हमारे पास 90 पे बनेगा और 270 पे बनेगा। ऑलराइट, तो 90 पर मैंने एक अनडिफाइंड सी लाइन बना दी है और 270 पर भी मेरे पास ऐसी एक लाइन बन जाएगी, मतलब ग्राफ कभी इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। 10 के ग्राफ बनाते हुए आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 10 45 डिग्री हमेशा हमारे पास 1 आता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी 10 45 होगा वहाँ पर आपके पास ग्राफ 1 आएगा, तो ये पॉइंट तो लेना आपको लाजमी है। अब 90 के बाद पॉइंट क्या आएगा? अब सब जगह इंटरवल जो आएगा वो 45 चलता रहेगा। 135, 180, 225, 270, 315 एंड देन 360। सारा इंटरवल हमारा चल रहा है 45 का। 10:45 पर होता है 1। एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास? 1 है। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 जाएगी। ये हमारे आ गई। अब आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। 10:45 पर क्या होता है भाई? 10:45 पर होता है 1, ये एक पॉइंट आ गया। 90 पर तो 10 मिलेगा ही नहीं, तो ग्राफ इसको कभी टच ही नहीं करेगा। 135 पर 10 क्या हो जाएगा? इट विल बी -1। 180 पे 10 होता है 0 और 225 पे 10 होता है हमारे पास 1। ये तो मिडिल आपके पास आ रहा है कर्व, ये तो मिडिल कर्व आ रहा है। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये कर्व आपका कुछ ऐसा बनेगा। ऑलराइट, ये आपका 10 का बिहेवियर होता है। अगर मैं 45 से कनेक्ट करूँगा तो ये ऐसे मूव करेगा। ये रेड वाली लाइन के करीब करीब पहुँचेगा, लेकिन कभी भी उसको मीट नहीं करेगा, कभी भी मीट नहीं करेगा, उसके नियरेस्ट पहुँचता रहेगा। और अब 315 पर क्या है आपकी लाइन? 315 पर -1 है और 360 पे आपकी लाइन 0 होती है। तो अब आपका कर्व ये नहीं कि आपने खाली इन 2 पॉइंट्स को मीट कर लिया, नहीं, ये हमेशा स्टार्ट होगा इन्फिनिटी की लाइन से। ऑलराइट, तो अगर हम 10 की पीरियड की बात करें तो 10 का जो बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड होता है, जिस तरह साइन कॉस का 360 होता है, 10 का हमारे पास होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? हर 180 के इंटरवल पे 10 का ग्राफ आपको कंप्लीट नज़र आएगा। ये 10 का एक कंप्लीट ग्राफ है। अब आप देखें 90 है, ये 270 है, तो इनका बीच कितना हो गया? 180 हो गया। तो 180 पे कंप्लीट बिहेवियर आ गया। ऑलराइट,
तो ये आपका 10 का एक सिंपल सा कर्व है। ऑलराइट, तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, दैट इज जून 2018 पेपर 1-2 का सवाल है ये। आपने कंस्ट्रक्ट करना है 1 + 10 3x को, और आपकी इंटरवल है 0 से लेकर 180। ये पूरा आपके पास एक रफली स्केच जो है ये गिवन था, ठीक है। अब इस सवाल को सबसे आसान तरीका क्या है करने का, भाई ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, ये सारी वैल्यूज़ x की हैं। तो मैं जब x की जगह 30 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, 60 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, 90 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, और इस तरह मैं सारी वैल्यूज़ चेक करता रहूँगा, ठीक है। अब मैं अपने पास कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास एक कॉलम है थीटा, और मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है y = 1 + 10 3x। अब आपके पास थीटा की जो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं 30, उसके बाद आ रही है 60, उसके बाद 90, 120, 150 एंड देन 180। मैं हर जगह ये थीटा डालूंगा, y = 1 +, अब 10 3 टाइम्स 30 क्या हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 1090 विच इज़ अनडिफाइंड, तो इसका तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो जहाँ पर मेरे पास 30 है वहाँ पर तो मेरा पहला एसिम्प्टोट आ गया, ठीक है भाई। दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या है आपके पास, 1 + 10 3 टाइम्स 60। अब ये आ जाएगा 1 + 10 180। 180 का 10 क्या होता है हमारे पास, इट्स 0। तो 180 पर जो पॉइंट आएगा, दैट मीन्स 60 पर जो पॉइंट आएगा आपके पास वो आएगा 1 के ऊपर, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप सबकी निकालेंगे, 1 + 10 3 टाइम्स एंगल क्या है इस दफ़ा हमारे पास 90, सो दैट इज़ 1 + 10 270। 270 आपका अनडिफाइंड होता है, तो दैट विल बी अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 90 पर भी एक एसिम्प्टोट बनेगा, एसिम्प्टोट बना दिया। इस तरह मैं बाकी वैल्यूज़ भी निकालता हूँ। तो ये वाली वैल्यूज़ सारी मेरे पास आ चुकी हैं। मैं ज़रा प्लॉट करता हूँ उसको। 60 पे मेरे पास 1 आ रहा है, 120 पे 1 आ रहा है, और 180 पे 1 आ रहा है। तो 120 पर ही 1 आ गया, और 180 पर भी मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखें ग्राफ, ज़ाहिरी बात है, हमें पता है 10 का बिहेवियर तो ऐसे स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है ना, ये जा रहा होता है। इनके बीच का पॉइंट क्या होगा, दैट विल बी 45। अब ज़रा मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ कि मेरे पास 45 पर क्या वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ पे प्लेस किया 45, ये आ जाएगा 1 + 10 3 टाइम्स 45 विच इज़ इक्वल्स टू 10 135। तो 10 135 क्या होता है आपके पास, इट्स -1, तो दैट विल बी 0। इसका मतलब ये इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा x एक्सिस को। इसी तरह अगर मैं देखूँ 60 और 90, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दैट विल बी 75। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 75 पर क्या वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज़ 2। तो ये मेरे पास आ गई सारी वैल्यूज़, और अब मेरा ग्राफ जो बीच में पास हो रहा होगा वो ऐसा जा रहा होगा। ऑलराइट, ये ग्राफ मेरा जा रहा होगा। 10 स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा इसका, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे चलेगा। ऑलराइट, इसी तरह हमारे पास जो बीच की वैल्यूज़ होंगी ना यहाँ पर, वहाँ पर भी ग्राफ आपका ऐसे ही बन रहा होगा, और ये आके यहाँ पर एक्सिस पे मीट कर रहा होगा। ये आपका स्केच हो गया।